morning, everyone. So we are on the banks of Pangong Lake right now in Man village. अभी प्लान ये है कि यहाँ से चांडला होते हुए we'll go back to Leh. सुबह के 7:30 बजे में and already सूरज धूप इतनी तेज़ है, I can't believe it. इतना harsh sun है यहाँ पर. And that is also the reason why यहाँ कोई रुकता नहीं है. मतलब शाम को टूरिस्ट पहुँचते हैं 4-5 बजे के आसपास और सुबह 8-8 बजे सब निकल लेते हैं. बिकॉज यहाँ पर दिन में रुकना मतलब दिन में रुका जा सकता है, बट देयर इज़ नथिंग दैट यू विल बी एबल टू डू इन द डे. सारा दिन आपको कैंप साइट में बैठा रहना पड़ेगा, बाहर तो निकल ही नहीं सकते, धूप इतनी तेज़ रहती है. एनीवे, अभी विल जस्ट गो टू द लेक, थोड़ा विल स्पेंड सम टाइम ऑन द लेक, उसके बाद हैव सम ब्रेकफास्ट एंड देन विल मूव ऑन. दिस इज़ द कैंप साइट. एंड जो प्रीटी मच यहाँ सारी कैंप साइट्स सेम ही दिखती हैं. ये सारे जो हैं ये डबल बेडरूम हैं. ये इधर वाले जो हैं ये दे कैन अकोमोडेट 3 पीपल, ट्रिपल बेडरूम के हिसाब से हैं. एंड दैट इज़ द लेक. एंड यहाँ से एज यू कैन सी द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन हियर. मान में जब पहली बार आया था तो कुछ नहीं होता था यहाँ पर, सिर्फ एक छोटा सा गांव, पीने के लिए पानी तक नहीं मिला था हमें यहाँ. एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ कैंप साइट्स एंड द amount of construction happening here in this small village. All right, let's go to the lake. This is the inside of the tent. Large, spacious. But जो ये चीज़ यहाँ मिसिंग है वो है कि फर्नीचर के नाम पे कुछ नहीं है, सामान रखने के लिए भी कुछ नहीं है. मतलब एक टेबल तो हो जिस पे कुछ फ़ोन कुछ रखा जा सके, भले बैग्स वगैरह नीचे रख सकते हैं, बट फ़ोन मोबाइल फ़ोन वॉलेट वगैरह कुछ तो हो जिस पे रखा जा सके. एटलीस्ट दे कुड अकोमोडेट समथिंग हियर. सेकंड प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि यहाँ पीछे कुछ है नहीं तो तकिया, यहाँ पीछे कुछ है नहीं तो तकिया खिसक के इधर घुसता रहा. एंड bathroom from the inside. So overall just an okay camp site. मतलब spacious है काफ़ी. And खाना was okay. But nothing too great. View अच्छा सामने से, but that is the case from every campsite anyway. This here is the dining hall. Nice sitting arrangement. Khana, as I said, was very average. But anyway, ठीक है campsite. I mean, for a night stay, we just need a bed to crash for the night. And उसके बाद अगले दिन निकल ही रहना है, तो उस हिसाब से campsite ठीक है, इतना बुरा नहीं है. Alright, now breakfast is done. Now it's time to move on back to Leh. पैंगोंग लेक पर हम लोग जिस कैंप साइट में रुके हुए थे उसका नाम ब्लू वेव्स कैंप था. एक ये ठीक ठाक कैंप साइट थी, एज यू जस्ट सॉ इन द वीडियो. इट इज़ लोकेटेड इन मान विलेज. हम लोग एक रात इस कैंप साइट में रुके एंड देन फिर नेक्स्ट डे हम लोग सुबह तकरीबन 8:30 बजे यहाँ से निकले ऑन आवर वे बैक टू लेह सिटी. दिस इज़ द स्मॉल विलेज ऑफ मान, प्रीटी मच इन द मिडल ऑफ नोवेयर. एक टाइम पर इस गाँव में सिवाय कुछ घरों के और कुछ नहीं होता था. बट एज यू कैन सी आज की तारीख में इस छोटे से गांव में घरों से ज़्यादा कैंप साइट्स और गेस्ट हाउसेज नज़र आते हैं. मान गांव की गलियों से होते हुए वी रीच्ड बैक द मेन रोड एंड देन वी स्टार्टेड ड्राइविंग ऑन आवर वे बैक टू
लेह सिटी। अब यहाँ से हमारा पहला डेस्टिनेशन था चांगला पास और वहाँ से फिर हमें ड्राइव करके दूसरी तरफ लेह पहुँचना था। अब पैंगोंग लेक हम लोग नुब्रा वैली से डायरेक्टली आए थे। लेह से पहले हम लोग नुब्रा वैली पहुँचे, वी स्टेड देयर फॉर 5-6 डेज और वहाँ से फिर अगमशोक रोड लेते हुए वी रीच्ड पैंगोंग लेक। तो इस ट्रिप में दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी वर गोइंग टू क्रॉस चांगला पास टू ड्राइव बैक टू लेह सिटी। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वी रीच्ड स्पांगमेक विलेज। ये भी एक छोटा सा गांव है एंड एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पर एक ये कैंपिंग स्पॉट है जहाँ पर बहुत सारी कैंप साइट्स एक साथ लोकेटेड हैं। अपेरेंटली जहाँ पर ये सारी कैंप साइट्स हैं यही वो जगह है जहाँ पर 3 इडियट्स का जो लास्ट का लेक वाला सीन है वो शूट हुआ था, जिसकी वजह से दिस स्पॉट इज़ पॉपुलरली नोन एज 3 इडियट्स पॉइंट। पहले हम लोगों का प्लान ये था कि सीधा ही निकल जाएंगे, बट देन व्हेन वी रीच्ड दिस स्पॉट वी डिसाइडेड टू चेक आउट दिस पॉइंट एज वेल, सो वी वंस अगेन टर्न्ड राइट एंड स्टार्टेड ड्राइविंग डाउन टू पैंगोंग। कुछ साल पहले तक जब लद्दाख में टूरिज्म इतना ज़्यादा नहीं था तो उस टाइम पर यू कुड ब्रिंग योर कार और योर बाइक ऑल द वे टू द लेक, बट फिर जब टूरिज्म बढ़ा तो लोगों ने फ़ोटो खींचने और रील बनाने के चक्कर में लेक के अंदर अपनी गाड़ियाँ घुसानी शुरू कर दी। कुछ इंसिडेंट्स हुए एंड उसके बाद लेक के किनारे तक गाड़ी लाने की सख्त मनाही हो गई। अब आपको अपनी गाड़ी लेक से थोड़ा दूर फासले पर छोड़नी पड़ती है एंड देन यू हैव टू वॉक डाउन द रिमेनिंग डिस्टेंस टू द लेक, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। वी पार्क्ड आवर कार एट दिस स्पॉट एंड देन फिर यहाँ से हम लोग पैदल चल के लेक के किनारे तक पहुँचे। दिस इज़ पैंगोंग। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है जिसकी पूरी लंबाई तकरीबन 134 किलोमीटर है और ये इंडिया से चाइना तक जाती है। इस लेक का तकरीबन 40% हिस्सा इंडिया में है और तकरीबन 60% चाइना में है। एट इट्स ब्रॉडेस्ट पॉइंट ये लेक 5 किलोमीटर तक चौड़ी होती है एंड विदाउट एनी डाउट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन आवर कंट्री। हम लोग तकरीबन 1 घंटे तक लेक पर ही रुके, जस्ट कुछ फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोज़ बनाए एंड उसके बाद फिर वहाँ से हमने अपनी जर्नी दोबारा कंटिन्यू की। इसके बाद अगले 2 घंटे हम लोगों ने नॉन स्टॉप ड्राइव किया, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर्स एंड वी रीच्ड डुरबुक। We just reached डुरबुक। फिर से उसी रेस्टोरेंट पे रुके जहाँ कल रुके थे खाना खाने के लिए। ये सामने से जो सड़क आती है, कल यहाँ से आए थे नुब्रा वैली शोक की तरफ से, दैट्स द वन दैट गोज़ टू पैंगोंग। और अभी हम जाएंगे इस तरफ, यहाँ से चांगला पास, वहाँ से फिर उतरेंगे सक्ती कारू एंड वहाँ से विल बी कंटिन्यूइंग आवर जर्नी बैक टू लेह। द एक्सपीरियंस एट पैंगोंग वाज गुड। बहुत भीड़ थी एंड अभी ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा है, मतलब सड़क पे पूरी भीड़ लगी हुई है, इतने लोग जा रहे हैं। बट अदर देन दैट द ब्यूटी ऑफ द लेक इट स्टिल रिमेन्स, इट वाज स्टिल ब्यूटीफुल, इट वाज स्टिल
a pleasure to see it again. I mean, I've seen it so many times before, but हर बार उस लेक को देखता हूँ तो अच्छा ही लगता है, मज़ा आया. Now let's go back. Next Saturday फिर वापस पैंगोंग ही आना है. After an enjoyable drive, we reached Soltuk. It is another small lake at the foot of Changla Pass. ये एक बहुत छोटी सी लेक है तो ज़्यादातर लोग यहाँ रुकते ही नहीं, सब पैंगोंग की तरफ ही निकल जाते हैं. But it is still a beautiful lake, even though small in size, but definitely worth taking a break. लेक के पास में ही एक छोटा सा ढाबा था where we had some tea and then we continued our journey. बट हम लोग सोल्टक से थोड़ा ही आगे गए थे जब हमें एक ये दूसरी लेक नज़र आई जो कि एक्चुअली उस वक्त कम्प्लीटली फ्रोजन थी, इवन दो द ट्रिप वाज इन द मंथ ऑफ जून. दूसरी लेक पर भी वी टुक अ शॉर्ट ब्रेक, वहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया एंड देन वी कंटिन्यूड आवर जर्नी टू चांगला पास. अनफॉर्चुनेटली सड़क उसके बाद बुरी तरह से ख़राब हो गई एंड वहाँ से फिर चांगला पास के टॉप तक सड़क बुरी तरह से टूटी हुई थी. अब तक जो जर्नी एन्जॉयबल थी, सडनली इट टर्न इनटू अ बम्पी राइड दैट वाज वेरी पेनफुल बट स्टिल वेरी एडवेंचरस. Stay with me if you wanna. Stay with me if you wanna. Stay with me if you wanna. Stay with me if you wanna.
Finally, after a very bumpy drive, we reached the top of Changla Pass. At an altitude of 17,688 feet, this pass was once considered as the third highest motorable road in the world, जो कि अब तो ये नहीं है, but it is still a beautiful pass and an adventurous drive. जिस वक्त हम लोग चांगला पहुँचे उस वक्त दोपहर के तकरीबन 1 या 2 बजे हुए थे. धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एंड बिकॉज सड़क टूटी हुई थी तो धूल भी हर तरफ बहुत ज़्यादा थी. We reached there, we looked around and we just did not feel like stopping at the pass. तो हम लोगों ने just अपनी ड्राइव कंटिन्यू की and we just started driving down on its other side. उसकी एक वजह ये भी थी बिकॉज हमें पता था कि हमने अगले सैटरडे वापस चांगला क्रॉस करना है, बिकॉज नेक्स्ट वीकेंड का हमारा प्लान पैंगोंग लेक, हानले और उमलिंग लागा था. सो वी थॉट कि जब नेक्स्ट सैटरडे वापस चांगला आना ही है तो अभी सीधा निकल जाते हैं, फिलहाल यहाँ रुक कर क्या करेंगे. So we just continued our journey and then we took a small break at the other side of the pass. चांगला ने हिला डाला. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सड़क यहाँ इतनी टूटी हुई होगी. मतलब पैंगोंग की तरफ से चढ़ रहे थे तो सोलटक तक भी सड़क ख़राब थी, और सोलटक से लेके चांगला टॉप तक तो बाय गॉड बुरी तरह से सड़क टूटी हुई थी. आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बिकॉज चांगला मैंने पहले भी कई बार क्रॉस किया है एंड यहाँ यूजुअली यहाँ टॉप के आसपास सड़क थोड़ी ख़राब होती है, बट पास के दोनों तरफ चढ़ाई की तरफ तो सड़क हमेशा मुझे अच्छी मिली है. आज पहली बार ऐसा हुआ है मैं चांगला क्रॉस कर रहा हूँ और सड़क इतनी बुरी तरह से ख़राब है. अभी चांगला चढ़ गए हैं. आई एम नॉट श्योर इस तरफ की सड़क कैसे ख़राब होगी, बट उस तरफ की सड़क को देखते हुए मुझे ज़्यादा उम्मीद कुछ खास है नहीं. चांगला पे हम लोग रुके नहीं, बुरी तरह से भीड़ लगी हुई थी, रश पूरा, सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे. सो आई डिडंट स्टॉप देयर एंड सीधा यहाँ नीचे ही उतर आए हैं. अब यहाँ से विल कंटिन्यू टू सक्ती, वहाँ से कारू एंड देन ले.